Hi everyone. So this presentation is for every founder, general counsel, or even for every law student or any business student who wanted to understand about the Digital Personal Data Protection Act. And as we have earlier discussed about the basics of the act, so this presentation is again dealing with the basics of the act, but now the whole presentation is specifically focused upon the act and rules thereunder. We will be discussing the highlights of the act to give you the better understanding on the act. So, as the name says itself, digital personal data protection. The whole intent of act is to protect the personal data, any nature of personal data which is in digital form. Intent of act is to protect that data. कोई भी डिजिटल डेटा आपने कलेक्ट किया है किसी भी फॉर्म में किसी भी इंडिविजुअल का how this or even if not individual of any person then how this data should be collected, how it should be stored, how it should be managed and what are the consequences अगर आपने डेटा को मेंटेन नहीं किया प्रॉपर से और कोई ब्रीच हुआ. So the complete act itself lays down everything about Digital Personal Data Protection Act. It tells you what you can collect as personal data. It tells you what you cannot collect as personal data. It also lays down the procedures, how you can collect the data. It also tells you for how long you can collect data, what is the correct manner to collect the data, and thereafter, what are the yearly compliance that you have required to do? What if anyone or any individual who is facing any grievance, then what is the correct way under the law? Then the law also teaches you, or the law also defines you what are the mandatory requirement for any organization to ensure that the personal data of individual is protected. What are the consequences if you fails to perform your duty? So आप एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और एक्ट की सीरियसनेस को इस परस्पेक्टिव से समझिए कि मैक्सिमम पेनल्टी अंडर द एक्ट इज 250 करोड़ की है और ये 250 करोड़ की पेनल्टी 50 करोड़ से स्टार्ट होती है जो एक बेस पेनल्टी पे है. 18 महीने एक्ट के फुल एनफोर्समेंट के लिए दिया गया है. एक्ट को 3 फोर्सेस में और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कुछ पार्ट ऑलरेडी इन्फोर्समेंट में आ चुका है, कुछ पार्ट नवंबर 2026 से इन्फोर्समेंट में आ जाएगा और कंप्लीट एक्ट मई 2027 से इन्फोर्समेंट में आ जाएगा. एज आई सेड 3 कमेंसमेंट फेसेस में ये डिवाइड है. तो अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट इट इज almost a complete year left for the absolute implementation of the act, and I personally believe that the most of the audience and most of the people, most of the general councils, or even I would say the most of the companies are not able to access or not able to judge at this point the long term implication of this act. आप समझिए कि like you have Ministry of Corporate Affairs for ROC compliance and everything. Soon you will have a data protection board for the data privacy compliance, data privacy reporting, data privacy audit fund for everything. And you understand that whatsoever data you are collecting and how you are securing that data, what sort of servers you are using, what sort of breach that uh, that you have not reported, or what sort of cyber attacks were done on your servers, and what sorts of breach complaint you have received from individual. आपने उन complaints को कैसे रिजोल्व किया है, उन complaints के रिगार्डिंग आपने क्या एक्शन लिया है. आप देखेंगे कि every single complaint or every single thing
wherein someone is claiming against your company through a email, भाई मैं कस्टमर हूँ या क्लाइंट हूँ, मेरा डेटा ब्रीच हुआ है, आपसे ही ब्रीच हुआ है, that puts you on a trial. आप एम्बिट को इस पर्सपेक्टिव से समझिए तो you'll get to know the implication and scale of this act. तो whosoever is thinking to apply this act, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट डे से ही या फिर पहले साल में ही परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लेंगे, नहीं. It will take time, things will move out as per their pace, बट आप जो पहले साल में उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, विद द टाइम आप उसके प्रोसेसेस और एग्जीक्यूशन को और बेटर करेंगे और स्ट्रिंजेंट करेंगे, and it will definitely take time. And when I say this is not something which is limited to the legal system, it extends to your policy, it extends to your how you are, what are your SOPs with regard to the data collection, data storage, where your data is stored, right? And what tax systems you are using, what is the nature of contract you are having with your cloud service providers or your server providers or anyone who is storing or holding data on your behalf. It is going to impact and affect everything. And accordingly, the implication of the act, if I have to say in one language, every single complaint is going to put you on an independent trial. Either it can be a nature of independent investigation within the organization, or it is something which has been a statutory action taken by the authorities. So this will help you to understand the implication and the scale of this act. आप हॉस्पिटल हैं, आप सेंसिटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सेंसिटिव डेटा की कैटेगरी में आप डेफिनेटली फॉल करेंगे जब ये क्लैरिटी आ जाएगी. आप एक ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत वॉल्यूम में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एवरी डे आपके साथ 10-20 हजार कस्टमर इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक क्रिटिकल कैटेगरी में है विद रिगार्ड टू द डेटा प्राइवेसी. आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप एक ट्रेडिंग कंपनी है, आप एक अपार्ट फ्रॉम दैट आप कस्टमर इंटरेक्ट डायरेक्टली कर रहे हैं, D2C कंपनी है, या अगर आप कंपनी ऐसी हैं जो डायरेक्ट टू कस्टमर इंटरेक्ट नहीं भी कर रही हैं, तब भी you are required to comply with the DPDP Act. And when I say the compliance of DPDP Act, it is not something which is merely for the definition and contractual sake. It is something जहां आपको continuously एक वॉच रखना होगा, एक एनालिसिस करना होगा ऑन एवरी ईयर बेसिस. एंड माय एंटिसिपेशन इज दैट यू विल सी जस्ट आफ्टर फ्यू ईयर्स, अपार्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव आप सेक्रेटरियल ऑडिट में एक रिपोर्ट ले रहे हैं विद रिगार्ड टू द कंप्लायंस ऑफ एवरी लॉ, बट यू विल सी दैट सून यू आर गोइंग टू हैव अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट that you have to state in your audit report or the complete financials about the implication of this act. So we have discussed the 8 doctrines within the single act, that why this matters: scope, notice, core obligation of every data fiduciary, significant data fiduciary, cross-border transfer, and then the enforcement timeline, lawful grounds, rights of the data principle, children and personnel with disability, personal data breach, penalties, and how and what can be the 12 months compliance roadmap. क्योंकि एक साल ही रह गया, आप देखिए कि सबसे important perspective समझिए. Most of the companies में working का जो स्टाइल है वो ऑर्गेनाइज ऑन पेपर ऑन सिस्टम है, बट इफ यूल सी आपकी सेल्स टीम कहाँ से कैसा डेटा कलेक्ट कर रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कलेक्ट देयर डेटा ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. आप पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, देन दैट डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कंपनी. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी आपको प्रमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं कंपनीज के थ्रू, आप या आपकी कंपनी कस्टमर्स को प्रमोशनल मैसेजेस भेज रही है. तो ये सारी एक्टिविटीज जो अब तक आप फ्री मूव करते थे विदाउट एनी थॉट, इट इज समथिंग दैट यू कैन डू नाउ ओनली विद इन दी फोर कॉर्नर्स ऑफ द एक्ट. आप एक I give you a very simple example. There is a company very famous
now for the lab testing. ठीक है, in more one or other day you will see you are receiving messages for the health checkup or lab test. इवन यू विल थिंक दैट मैंने तो कभी इनसे डाटा शेयर भी नहीं किया, बट फिर भी अगर कभी किया भी होगा तो यू आर अवेयर कि आपके पास ऐसे रिपीटेडली आफ्टर सम टाइम ये मैसेजेस आते रहेंगे विद रिगार्ड टू योर ब्लड चेकअप, योर किडनी चेकअप, योर हार्ट चेकअप, all those kinds of checkups, all those kinds of messages, uninvited messages that you weren't expecting earlier, right? So this is primarily the case of data breach, especially उन केसेस में जहां कभी कस्टमर ने उस कंपनी के साथ इंटरेक्ट किया ही नहीं. अब most of these companies takes the services of telemarketer to share these messages. तो आपका उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है, टेलीमार्केटर आगे कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपके एक्ट कर रहा है विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट विद देम. सो दिस इज समथिंग विच फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ डीपीडीपी एक्ट, इसको रेगुलेट करना मैंडेटरी है. एंड the penalty under the act is 250 CR, and this is per breach of the obligation to take reasonable security safeguards. अगर आप फेलियर टू गिव ब्रीच नोटिस आप नहीं देते हैं तो 200 करोड़ का पेनल्टी है. अगर आप फेल हो जाते हैं चिल्ड्रन डेटा ऑब्लिगेशन जो अंडर एक्ट डिफाइन की गई है उसको कंप्लाई करने में, 200 करोड़ का पेनल्टी है. सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी अपनी ड्यूटीज नहीं पूरी कर पा रहा तो 150 करोड़ की पेनल्टी है. 150 CR penalty is there. So the intent of penalty is to just to give you the seriousness of the just to convey you the seriousness of and the nature of the act, and it is not something that has been done by us. You will see that a hefty amount of penalty has been imposed under GDPR Act upon multiple companies. So as I said, 13 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था 2025 में, which brought the act into force into 3 phases. The first phase was in 13th November 2025. कुछ ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये इम्प्लीमेंटेशन में लाए गए जिससे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डेफिनेशन, अपॉइंटमेंट्स एंड रूल मेकिंग पावर ये सब इन प्रोसेस लाया गया. यानी कि द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज ऑलरेडी देयर. And just to give you insight, data protection board is like you have an independent authority. You may compare it with the MCA just to get an understanding on the aspect, or you may compare it with the NCLT. Then the appellate authority for DPDP is going to be TEDSET, that is Telecom Regulatory Development Authority का जो tribunals हैं, those are going to be the appellate authority for it. Then the phase 2 will be under implication from this November itself. कंसेंट मैनेजर का रजिस्ट्रेशन विद द बोर्ड, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास ये कंसेंट मैनेजर को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा. कब ये कंसेंट मैनेजर कौन, सिंपली समझिए कि जिनकी कुछ कंपनीज जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू द टर्नओवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल करेंगी, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं एज कंसेंट मैनेजर विद द डेटा प्राइवेसी बोर्ड. एंड they have to report, they will be within the ambit of the data privacy board itself. अभी कंसेंट मैनेजर आईटी कंपनीज होने वाली हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज, बी इट the existing IT companies, or we are also witnessing the top players are also engaging to establish themselves as consent manager. अब ये देखना होगा कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसा होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा giant या corporate house, they themselves are in the capability to establish themselves as consent manager. अब consent manager की rulings, I'll give you a very simple example. Say for example, if there is a giant like Reliance or say for example Jio or say Data, they have established their independent companies, and there the company have approached to the board, and there they have said कि हमने सारा law comply कर लिया है and we are fit to be recognized as consent manager, and thereafter they'll be the one who will be managing the consent data for and on behalf of the companies जिन्होंने उनके services ली हैं as consent manager. वो consent manage भी करेंगे, erase भी करेंगे, withdraw भी करेंगे. So they'll be kind of the interaction point with regard to the any issue where someone is sharing the consent or someone is withdrawing the consent.
Then you will see the third phase, that will be the 13th May 2027, जहां से ऑलमोस्ट फुल इन्फोर्समेंट में आ जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन से 18 मंथ्स का टाइम था, बट अभी ये वन ईयर का, मोर और लेस वन ईयर का टाइमलाइन रह गया है। एंड टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, आप ये भी समझिए कि किसी भी कंपनी के लिए फर्स्ट एस्पेक्ट रहेगा कि वो अपना डेटा मैपिंग करे, यानी कि उनका डेटा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कलेक्ट हो रहा है, किन किन ऑफिस में हो रहा है। सबसे पहला काम वो रहेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट इटसेल्फ, a good implementation of the act with proper auditing will itself take minimum 6 to 8 months. So if you see, more or less companies के पास कुछ ज्यादा टाइम है नहीं, और more or less every company will prefer that within the financial year they implement the act itself. So moving forward with the act, अब you'll find there are four critical terms in the act, that is data principal, data fiduciary, data processor, and the consent manager, which I discussed in my previous slide itself. That data principal is the one, the natural person to whom the personal data relates. It can be a data of individual through their parents or lawful guardians, and it also can be person with disability acting through their lawful guardian, or any individual who is sharing his data. डेटा के नाम पे आप आधार हो गया, घर का एड्रेस हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंकिंग डिटेल्स होगी, then it can be some commercial address also, then the phone number. So everything falls within the aspect of the data itself. Then the data fiduciary is the one who is collecting the data from the data principal. अगर आप कंपनी हैं, आप चाहे रियल एस्टेट कंपनी है, आप चाहे हॉस्पिटल हो, या फिर आप एक आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या फिर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या सर्जिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आप कोई भी डेटा नेचुरल पर्सन का कलेक्ट कर रहे हो, देन यू हैव टू कंप्लाई विद द Digital Personal Data Protection Act. Now, it does not mean that data principal is something which is a term limited to the capability of a customer or a company interaction. नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप डेटा प्रिंसिपल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप वेंडर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप कंपनी के डीलर बना रहे हैं उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप कंपनी के रिटेल स्टोर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपके ऑडिटर्स आपके बिहाफ पे स्टॉक ऑडिट्स के टाइम पे कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. सो दिस ऑल फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ डेटा प्रिंसिपल, एंड द डेटा फिड्यूशरी इज द कंपनी और द एंटिटी that decides ki why and how this data should be collected. And the person who processes personal data on behalf of data fiduciaries, so this can be your servers also, the application through which you are collecting the data, and server where you are storing this data. This can be the any other intermediary जिसकी आप सर्विस ले रहे हैं for the collection of this for this processing of this data. And it can be the case where company itself can be a data processor if they are keeping an absolute role within the company for every aspect, and for every such things the fiduciary remains accountable. Then the consent manager, this consent manager is something that is going to be a board registered entity जो data privacy board पे अपने आप को register करेगी, right? And this will let a data principal, यानी कि ये जो भी आपसे इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर रहा है वो अपना डाटा दे, मैनेज करे, रिव्यू करें या विड्रॉ कंसेंट करें थ्रू अ प्लेटफॉर्म जो कि कंसेंट मैनेजर का प्लेटफॉर्म होगा. एंड दिस इज द फिड्यूशरी ड्यूटी टू द principal. So these are the critical terms for the act itself, that includes principal, fiduciary, processor and consent manager. So section 4 permits that the processing of personal data, आप कोई भी personal data को process कर सकते हैं दो ही conditions में, या तो with consent आप collect कर रहे हैं, that is the one door way to collect the data. Free data हो, मतलब as per the contractual act it has to be a free consent, then data has to be very specific. Person should be informed clearly why his data has been collected. Unconditional consent होनी चाहिए, unambiguous
एंड क्लियर कंसेंट होनी चाहिए एंड लिमिटेड टू व्हाट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ओनली दैट डेटा शुड बी कलेक्टेड। कंसेंट भी उसी पर्पस से आपको क्लियर करना चाहिए कि इस पर्पस के लिए आप डेटा यूज करने वाले हैं। एंड दिस इज समथिंग विच कैन बी ड्रॉन एनी टाइम एज विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज 6 of the act. Then the second doorway to collect the data is the legitimate use, that is the voluntary disclosure, state subsidies, benefit services, statutory functions, courts and tribunal, medical emergency, epidemic, disaster, public order breakdown, employment. So these can be the cases where the data has been collected for the purpose of the legitimate use. So these are the only to a doorway through which one can collect the data. But that doesn't mean if you are collecting the data of the employee, then you don't have to comply with the DPDP Act in terms of the employee. No, you are required to do so. What a compliant notice must say. It should be a standalone notice, which should be something easy for anyone who is reading the notice and who is giving his consent. As I said, the plain and clear language should be there. Clear, carry an itemized description of the personal data being processed, state the specific purpose, provide a link means to withdraw the consent. Consent manager acts as the single point of contact. As I said, who can act as the consent manager? An entity जिसका 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ होगा और ये डीपीडीपी पे रजिस्टर है। ये फिड्यूशरी कैपेसिटी में एक्ट करेगी, डेटा प्रिंसिपल के बिहाफ पे कंसेंट लेगी, प्रोसेस करेगी और अगर डेटा प्रिंसिपल डायरेक्ट करेगा कंसेंट को विड्रॉ करना चाहता है तो अकॉर्डिंगली ये कंसेंट को मैनेज करेगी और कंपनी को अकॉर्डिंगली डेटा फिड्यूशरी अकॉर्डिंगली कंसेंट डेटा इरेज करेगा या डिलीट करेगा, however within the compliance of the act itself. And they, as I said, they are required to maintain the records of consent notices and data sharing and gives the principal machine readable access on request. तो नोटिस, कंसेंट एंड कंसेंट मैनेजर ये 3 क्रिटिकल टर्म है फॉर द एक्ट। एंड एज आई से कि आप जैसे नोटिस दे रहे हैं क्लाइंट को, इंडिविजुअल को जिसका भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्लियर कंसेंट ले रहे हैं और देन द रोल ऑफ द कंसेंट मैनेजर। आप कंसेंट मैनेजर को आप ये समझिए इट इज गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डेटा प्रिंसिपल द डेटा फिड्यूशरी। अब ये कंसेंट मैनेजर वही बन सकता है जो डीपीडीपी एक्ट में रजिस्टर होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, से फॉर एग्जांपल एनी VC fund or any or even I give you a very simple example, like if anyone has to operate the business of a non-banking financial corporation, then they have to register themselves or act within the ambit of RBI. Similarly goes with the DPDP also on data privacy board also. तो consent manager को उसी तरीके से within the ambit act करना होगा। And you will see most of the IT companies and most of the giants are jumping into the category of consent manager. There is a specific reason that there is a surge in there is surge in the business with regard to the data servers, where companies are acquiring lands and they are building the capacity to store the data itself. So every data fiduciary must publish on its website or application the means to exercise these rights, the identifier required, and a grievance redressal window not exceeding 90 days. So they are by any way you are digital collecting the data. देखिए कोई भी कंपनी के डिजिटल कलेक्टिंग डेटा के फॉर्मल वे दो ही हैं कि अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी है या फिर कोई इंटरैक्टिव वेबसाइट है where the platform for customer is of a such a nature that they can interact with their website, they can take their goods or services from their website or application itself, and therein they are giving their consent, and therein through which they are taking their services or goods by paying the relevant money. So this is the one way, one route.
through which you are collecting the data. The other way, the similar format आप एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, ये हो गया तो फॉर्मल वे जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हैं. अदर वे क्या हो गया, आपकी सेल्स टीम डाटा कलेक्ट कर रही है, आपकी सेल्स टीम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रीच कर रही है इंडिविजुअल्स को, एंड देयर आफ्टर दे आर कलेक्टिंग दी डाटा. व्हाट्सएप के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, रैंडम कॉलिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड देयर आफ्टर दे आर जनरेटिंग लीड्स. सो everything falls within the ambits of something wherein you are collecting data apart from two formal ways I told you earlier, that is website and app. अब आप इस चीज का इम्प्लीकेशन समझिए. ईमेल मार्केटिंग से लेकर रैंडम कॉलिंग से लेकर व्हाट्सएप डाटा कलेक्शन, आपको सब चीज को विद इन द एम्बिट ऑफ एक्ट लाना पड़ेगा ताकि ये वायलेशन ऑफ एक्ट ना हो. आपका एम्प्लॉय अगर व्हाट्सएप से डाटा कलेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल का, so that is simply a violation of the act, or act states that for the violation of any data processor or for any act done by the data processor, data fiduciary will be liable. तो आपको अकॉर्डिंगली कंप्लायंस और सिस्टम्स सबसे पहले सेट करने होंगे कि आपका डाटा कहाँ कहाँ ट्रेवल करेगा, किस वे से ट्रेवल करेगा और कहाँ स्टोर होगा. सो नंबर 1, 5 राइट्स. Number 1, access. Summary of personal data and processing, identify those whom it is shared. Then the correction and erasure, correct, complete and update or erase personal data unless retention is required by law. सबसे important है कि company is required to appoint a grievance redressal officer. As I said, अभी लोग समझ नहीं पा रहे implication of this act, but you'll soon see कि the moment there is a knowledge and the moment there is education in the market with regard to the existence of this act, और वो education extend होती है common individuals तक, common customers तक और एक layman तक, then you'll be able to understand the implication of this act. तो अगर आपको किसी ने कोई ग्रीवियंस विद रिगार्ड टू द डेटा भेजा है और आपने उसको एंटरटेन नहीं किया, आपको कोई ऑफिसर ही नहीं है, then you are directly within the violation of this act itself. And the job of this officer is to take the grievance resolved that within the specified timelines as per the section 13 rule 14 subclause 3 of the act. Then you can nominate on your behalf or as any individual to exercise the right on your death with regard to your personal data. Then you can also withdraw your consent at any time with the same is with which it was given. So और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा फिड्यूशरी की कि जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एज अ कॉमन नेचुरल पर्सन, उनके लिए उतना ही इजी जितना कंसेंट देना है विड्रॉ करना भी रखे. So what is non-negotiable duties for any data fiduciary or for say any company? आप डेटा कलेक्ट करें, that is only for the lawful purpose defined under section 7. Then आप कलेक्ट नोटिस इशू करें, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें, और ये आप जो भी कंसेंट का नोटिस दे रहे हैं इट हैज टू बी इन 22 लैंग्वेजेस ताकि वो लैंग्वेजेस का बैरियर ना रहे, और इट शुड बी वेरी सिंपल विच इज वेरी इजी फॉर एनी लेमैन टू अंडरस्टैंड. आपके पास रीजनेबल इंक्रिप्शन है, सिक्योरिटीज है विद रिगार्ड टू दिस स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डाटा. there should be relevant backups, there should be the relevant security measures also, and आपने डाटा मास्किंग कैसे कर रखा है वो सब रेलेवेंट हो जाएगा. देन ब्रीच कुछ हुआ तो आपका इंटीमेशन कितने टाइम में जाना चाहिए, एंड इट शुड बी गिवन टू द बोर्ड आल्सो विदाउट एनी डिले. व्हेन आई से ब्रीच, इट इज नॉट समथिंग, अगर कस्टमर ने भी आपको इन्फॉर्म किया कि उसका डाटा ब्रीच आपसे इन्फॉर्म हुआ है, देन इट इज योर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम अर्लियर there is a guidelines by this cyber authorities that you have to inform them within a certain timeline of attack, a cyber attack. And now it is also required under the act that you are required to inform the data protection board. So previously we have seen there are multiple data breach instances in India with regard to the banking system also, credit card details also. आप ये समझिए more or less we have been saying कि that there are multiple platform to buy and sell data. There are multiple ways through which people are buying the data and thereafter they are doing a random call. आप इसका implication ऐसे कीजिए कि मुझे random call आया किसी कंपनी की तरफ से, उनके किसी टेली मार्केटिंग. यूजुअली प्रैक्टिकली होता क्या है कि आपने टेली कॉलिंग का काम आउटसोर्स किया किसी
XYZ अदर कंपनी को जो आपके बिहाफ पे कॉल कर रही है, एंड देन दे आर फ्रॉम देयर दे आर जनरेटिंग लीड फॉर यू, राइट? और आप रिकवरी के बिजनेस में हैं और आपने क्रेडिट कार्ड का बैंक ने डेटा शेयर किया अपनी रिकवरी कंपनी के साथ, एंड देयर आफ्टर दे आर कॉलिंग यू। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन। किसी ने भी अगर ये कंप्लेंट डाल दी कि मैंने तो कभी डेटा शेयर ही नहीं किया, दिस इज अ डेटा ब्रीच, क्योंकि कॉल ही मुझे इस कंपनी XYZ के नाम से आया, तो दैट इज ब्रीच ऑन देयर पार्ट। नाउ यू आर अगेन ऑन अ ट्रायल। So for that, to ensure कि there is not something which is breached by you, then the requirement under law is कि आपका compliance, उसका execution, operational system, security measures and yearly compliance and audit, internal audit itself is something which you can do also. वो आपको regularly maintain करना पड़ेगा to place a picture of your side that nowhere you are in non-compliance with law. So this will help you to understand the implication of the act. Then where data drives a decision or is shared onward, keep it in correct and current form. Then erase data on consent withdrawal when purpose is served unless law requires. अगर जिस पर्पस से डेटा आपने कलेक्ट किया पर्पस फुलफिल हो गया, देन यू हैव टू डिलीट द डेटा। मान लीजिए आप एक रियल एस्टेट कंपनी है, कस्टमर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर को आप पिच कर रहे हैं, तो आपको या तो उसे बताना पड़ेगा कि पहले तो लॉ इटसेल्फ सेज दैट कि जिस पर्पस के लिए आपने कलेक्ट किया है उसके बाद आपको डेटा डिलीट करना पड़ेगा, या आपने कस्टमर से कंसेंट लिया है अपने टर्म्स एंड कंडीशन को इस तरीके से मॉडिफाई करके जिसमें कस्टमर अग्री कर रहा है कि आप उसका डेटा फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, बट एनी हाउ देयर इज द टाइम टेन्योर जिसके बियॉन्ड आप डेटा नहीं रख सकते, वो आपको विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा। देन प्रोसेसर गवर्नेंस, एंगेज प्रोसेसर्स ओनली अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका डेटा प्रोसेस करेगा उनके साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है। एज आई सेड कि जो भी वो एक्ट करेंगे, आपकी कोई थर्ड पार्टी एजेंसी है, आपके सेल्स पर्सन हैं, आपके सर्वर्स होल्डर्स हैं, या फिर आपके कोई वेब आईटी सिस्टम्स कोई आउटसाइड मेंटेन किए जाते हैं, तो किसी भी तरीके से जहां भी आपका डेटा प्रोसेसर्स होंगे उनके एक्ट के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। Then the grievance redressal, as I said, maintain an effective grievance redressal mechanism, and you must publish your data privacy operation DPO contracts also. Verifiable consent, and consent, as I said, is something which should be very free consent and within the four corners of the contract act itself, which defines a consent should be free from force, coercion, fraud, and everything. And when it is about a child consent, it has to be only through their parents or the legal guardian. A fiduciary must obtain a verifiable parent consent, means you need to verify itself the one who is giving the consent on their behalf is their parent, and the verified parent is identifiable adult. Although there are certain loopholes, there are certain unclarities in the act with regard to the certain things, like in this case, that how you are going to verify all those things. Then there are certain clarities which is required on the side of the consent manager also. As far as now, we haven't seen any mandatory turnover limit wherein you have to comply uh, uh, with the audit. Although the act itself very clearly says that irrespective of your turnover, if you are collecting a natural person data and it it is collected in digital form, then you have to comply with the basics of the act. Then too hard prohibition, processing likely to cause detrimental effect on well-being of a child, or tracking behavioral monitoring or target advertising directed at children. In this case, you cannot collect the person data of the child. Then verify the lawful guardian. Schedule for carves out healthcare, education, crèche, transport, and limited safety-led purpose. So this is something where exemption has been given to few sectors with regard to the rule 11 and rule 12. Who is an SDF? Notified by the central government on the basis of volume and sensitive data, risks to data principles, rights, impacts. Significant data fiduciary कौन होगा? Significant data fiduciary based upon volume and sensitive data आप क्या collect कर रहे हैं? As I said,
आप एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, आप एक बड़ी एक हेल्थ सेक्टर की प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर कलेक्टिंग द डाटा, देन यू फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। देन आपके रिस्क टू डेटा प्रिंसिपल्स क्या है, राइट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया सोवरेनिटी इंटीग्रिटी पे क्या आएगा, रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर। सो ऑल दिस फैक्टर्स डिसाइड्स हु इज अ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। एडिशनल ड्यूटीज क्या है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज की? अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट whosoever is a significant data fiduciary, they must appoint an India-based data protection officer. So you'll see that every giant e-commerce, every big company who's collecting the data, and that includes sensitive data. अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आप हेल्थ रिपोर्ट्स इंडिविजुअल्स की, वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो जाएगा, या फिर अगर आप एक ई कॉमर्स कंपनी है जो वॉल्यूम में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दिस आल्सो इंक्लूड्स सेंसिटिव पर्सनल डेटा। Then appointment of a data protection officer, appointment of independent data auditor, then conducting an annual data protection impact assessment and audit. Then verifying that algorithmic software does not pose risk to principal rights, localized, specialized personal data and traffic data, no transfer outside India. This is very important. You need to see, that is why I have given you a reasoning that there is surge in the establishment of data servers in India. The 72-hour window. On becoming aware of any personal data breach, Rule 7 imposed two parallel duties for any organization to data principals and to the board. पहला आप इन्फॉर्म करेंगे कि आप डेटा प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्म करेंगे डेटा ब्रीच के रिगार्डिंग, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी इन्फॉर्म करेंगे। जो इफेक्ट हुए हैं विदाउट डिले यू विल इन्फॉर्म देम थ्रू द रजिस्टर्ड चैनल, और आप अगर ईमेल्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे, या आपने फोन का कंसेंट भी लिया हुआ नंबर का, मैसेजिंग का, व्हाट्सएप का, तो आपको उनको रेलिवेंट चैनल से इन्फॉर्म करना होगा किस टाइप का ब्रीच हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अपने रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, फर्दर सेफ्टी टिप्स एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट फॉर क्वायरीज। This is going to be very critical. Take an example. Last, I guess, a few years back, we have seen an instance where is a very huge volume of data breach in case of a credit card company. And had this act been under enforcement, तो पहली तो वो clearly violation of the act है, तो they are within the ambit of penalty itself. Secondly, they were required to inform to every individual जिनका data leakage हुआ है इस फॉर्म, जो कि I don't think कि individuals को inform किया गया था. Then the duties towards the board is first without delay आपको उनको inform करना है कि nature, extent, timing, location और उसका impact. Then within 72 hours updated detail, broad facts, root cause क्या है, आपने क्या measures लिए हैं, who was the preparator for this, and report on intimation given to the principals. जी आपने report principals को क्या दी है with regard to the data breach, you also, there is also duty upon you to inform. अब डेटा ट्रैवल कहाँ कर सकता है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, रिटेंशन एंड इरेजर्स. Personal data may be transferred out India subject to restriction by the central government. And as I said, in case of a sensitive personal data, for significant data fiduciary, it is mandatory for them to store the data within the India. Then you can share the data with certain countries wherein India is already having a data exchange treaty also. Right, and then 3 years of dormancy and the data must go. For e-commerce entities having a user of more than 2 crore users, or online gaming intermediaries having a 50 lakh users or more, social media intermediaries having 2 crore users or more. Schedule 3 fixes the retention clock of 3 years from the principal's last interaction. Right, 48 hours prior notice before erasures. Logs and personal data minimum 1 year for security purpose you have to maintain. But if they remain or there is a no interaction from past 3 years, then it is mandatory for you that you have to erase their data by giving them a 48 hours notice, prior notice. So failure to take reasonable security will therein a penalty of 250 crore can be imposed. Failure to give breach intimation to data principal, data privacy board,
that will attract a penalty of up to 200 CR. Breach of obligation relating to child, then 200 crore. Breach of additional obligation on significant data fiduciary, then 150 crore. Breach of any term of voluntary undertaking up to original amount whatsoever loss has been established or damages has been established. Breach of duties by data principal. This is very interesting to see. Individual or natural person whosoever is sharing data with you, even they are within the ambit of the act, and something agar if they have given a false data or something, they can also penalize with a penalty of up to 10,000 rupees. Any other breach of the act or rules, a penalty that starts base penalty from 50 crore. So quantum is set by the board after considering nature, gravity, duration, repetition, gain or loss avoided, mitigation, proportionality, and impact. सो इन फर्स्ट फेज यू मस्ट डिस्कवर दैट आपकी कंपनी में डेटा फ्लो कहाँ कहाँ से हो रहा है, उसको मैप करो. And then personal data flow, collection, storage, processing, everything should be mapped. Classified data को आप divide कीजिए, identify processors, build the record of processing. Then you find out the gap in the data. Then the second phase is design and remediate, rebuild notice and consent flows, deploy rule 6 security safeguards, encryption, access controls, logging backups, stand up rights and grievances portal. You must publish your DPO contract also. Then the 6 to 12 months is for operationalize assurance processor contracts updates within the रूल 6 सब क्लॉज एफ सेफगार्ड्स. आपके सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरमीडिएट्स के साथ हैं वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे. ब्रीच प्लेबुक क्या है आपका, हाउ यू आर गोइंग टू रिपोर्ट एंड हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट. इफ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी हैं आप, तो आपको डीपीओ अपॉइंट करना मैंडेटरी है. डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना आपके लिए जरूरी है ऑडिट के साथ साथ. प्लस एज आई सेड कि इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी तो आपका डेटा भी विद इन द इंडिया स्टोर होना चाहिए. So these are the basics of the Digital Personal Data Protection Act. As the act itself says that the whole intent, object, and motive of the act is to protect the personal data of the natural person. And I give you a very simple example. If you are someone who is collecting the data, or someone from your team is collecting the data on WhatsApp, be it the Aadhaar, PAN, for ease of the business, considering that operational will be on faster phase. No, you cannot do so. Even if you are doing, it can be only through the WhatsApp business. And therein also a specific contract is required. And then the process must be very clear. अगर आप ऐसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी सेल्स टीम ऐसे डेटा कलेक्ट कर रही है जो अब तक आपका होता आ रहा था, अगर वो फ्यूचर में कंटिन्यू होता है किसी भी एक रैंडम कंप्लेंट के बाद, you'll be the subject to an independent investigation. The only way out to bypass this thing is to make sure that you are the law compliant, and at the same time you are making a data protection impact assessment also. And it is not something which is only for the significant data fiduciary to do data protection impact assessment. No, it is not. As I gave you example, even a random complaint by any individual that there is some sort of a data, his or her data leakage on account of your company, then you are subject to an independent investigation or trial itself. Right. So in the following videos where we are sharing the knowledge and the implication of the Data Privacy Act, we will be sharing the practical instance. I'll be sharing the practical instance कि अगर आप WhatsApp से डेटा आपकी सेल्स टीम कलेक्ट कर रही है तो वो कैसे सही है और वो कैसे गलत है, और प्रैक्टिकली वे आउट क्या होगा उसका, उसके रिगार्डिंग. So thank you for your time.